Hare Krishna, it sounds weird. Hare Rama, Srila Prabhupada ki, Shishivara Shama Sundar ki, Gaur Nitai ki, Giriraj Govardhan ki, all the Vaishnavas and Vaishnavis ki, Punjabi Bhag ISKCON ki. Hare Krishna. So in this verse of Srimad Bhagavatam, we hear about the demoniac activities of Hiranyakashipu. श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में हम हिरण्यकशिपु की आसुरिक कार्यकलापों के बारे में पढ़ते हैं. So, why are we interested in hearing about the activities of a demon? तो हम एक असुर के कार्यकलापों के बारे में पढ़ने के लिए क्यों रुचि रखते हैं? Maharajas are supposed to come to Punjabi Bhag temple and speak about Krishna. कि महाराज ने तो पंजाबी बाग मंदिर में आना था और कृष्ण के बारे में पढ़ना था. So what am I doing speaking about Hiranyakashipu? तो मैं हिरण्यकशिपु के बारे में क्यों पढ़ रहा हूँ? Because by hearing about him in the Bhagavatam, at least we can understand that we don't want to be like him. क्योंकि कम से कम इनके बारे में पढ़ के भागवतम से हमें ये समझ आएगा कि हमें क्या नहीं बनना. There's actually a school of philosophy which employs the technique of elimination. दर्शन में विशेष रूप से एक विद्यालय है जो एक शाखा है जो ये पढ़ाती है भगवान को कैसे समझा जाए नकारात्मक रूप से चीजों को नकार. In understanding what is God. कि भगवान को समझने के लिए. Atraiva mrigya purusho neti neti. The absolute truth is not this, not that, not this, not that, not this, not that, like this. By eliminating everything that isn't God, these people hope to understand what is God. अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेति. ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. कि सारी चीजों को नकार के ये समझना कि उम्मीद रखना कि भगवान क्या है. So by hearing about a demon like Hiranyakashipu, we understand, I don't want to be like that. एक आसुरिक हिरण्यकशिपु के बारे में पढ़ के ये समझ में आता है कि मैं इस प्रकार का असुर नहीं बनना चाहता. You've read the 7th canto of the Bhagavatam. You've read the 7th canto of the Bhagavatam. किन्होंने सप्तम स्कंद पढ़ा है भागवतम का? Did your love for Hiranyakashipu increase? कि आपका जो प्रेम है हिरण्यकशिपु के प्रति क्या वो बढ़ा है? But later in the Bhagavatam, we're going to hear about Prahlada Maharaja, the great devotee of Nṛsiṁha. अरे तो भागवतम के आगे चल के हम भगवान के महान भक्त प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ते हैं जो नरसिंह भगवान के भक्त थे. And by hearing about him, we think, that's what I want to be like. और उनके बारे में पढ़ के तो हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ. The Padma Purana states that there are 2 classes of men and women in this world. पद्म पुराण में बताता है कि 2 श्रेणियां हैं लोगों की इस संसार में. The divine, एक है दैवी, all of you, आप सब, and somewhere out there the demoniac. और कई बार आसुरिक प्रवृत्ति है. Dvo bhutos shargo lokashmin daiva ashurya evacha Vishnu bhakta shmito daiva ashurstad viparyaha. 2 types of people, divine and demoniac in this material creation. 2 प्रकार की श्रेणियां हैं लोगों की संसार में, दैवी और आसुरी. In the Satya Yuga, the divine and demoniac, they lived in the same universe. तो सत्य युग में दैवी और आसुरी दोनों श्रेणी के लोग एक ही ब्रह्मांड में रहते हैं. There was plenty of room. The demons lived over there and the devotees lived over here in the universe. बहुत स्पष्ट रूप से विभाजन था कि आसुरी लोग यहाँ रहेंगे, दैवी प्रकार के लोग यहाँ रहेंगे. In Treta Yuga, the divine and the demoniac, they had to live on the same planet. Some over there and some over here. त्रेता युग में दैवी और आसुरी श्रेणी के जो लोग हैं एक ही लोक पर रहेंगे. In Dwapara Yuga, the divine and the demoniac lived in the same city. द्वापर युग में एक ही शहर में रहेंगे दैवी और आसुरी प्रकार के लोग. But in Kali Yuga, the divine and the demoniac live in the same body. परंतु कल युग में
दैवी और आसुरी ये एक ही शरीर में रहेंगे. We have within us lust, anger, greed, demoniac qualities. It's not very nice. हमारे अंदर आसुरिक गुण भी है, अवगुण भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह. How do we get these demoniac qualities out of our body? तो ये जो आसुरिक प्रकृति है हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न होती है? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Chaito Darpana Marjana. They're cleansed by chanting this mantra. तो कैसे खत्म होती है हरे कृष्ण महामंत्र से? चेतो दर्पण मार्जना, पूर्ण रूप से शुद्ध होना. Now, because both divine and demoniac beings share this world, there's bound to be friction. क्योंकि दैवी और आसुरिक जो प्रकृतियां हैं, ये एक कमरा शेयर कर रही हैं, तो निश्चित रूप से आपस में कुछ फ्रिक्शन भी होगा. Friction is caused when two opposing elements they rub together very quickly, like two pieces of rock. It makes a spark. तो ये जो फ्रिक्शन है, जब विपरीत स्वभाव की जो चीजें हैं आपस में एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और उसमें से चिंगारियां निकलती हैं. So in this world there's divine and demoniac. Sometimes the rubbing together, friction is caused. तो इस संसार में दैवी और आसुरी श्रेणी के जो लोग हैं आपस में रगड़ते हैं और कुछ न कुछ प्रकार के उत्पन्न होता है. Shastra describes how these two divine and demoniac personalities are rubbing together. शास्त्र ये वर्णन करता है कि दो प्रकार के जो लोग हैं किस प्रकार से आपस में रगड़ खाते हैं. It's very interesting. बहुत रुचिकर है. Devotees, जो भक्त हैं, devotees are going upwards. जो भक्त हैं वो ऊपर की दिशा में जा रहे हैं. Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Sharayo. Learned devotees are always looking towards the lotus feet of the Lord. जो भक्त हैं वो सदैव उनकी जो दृष्टि है भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित है. But where are demons going? Down. जो दैत्य हैं वो कहाँ जा रहे हैं? नीचे. Tanaham Twishta Kuran Shamshu Reshu Naradhaman. Those who are envious, Krishna says, and mischievous, who are the lowest amongst men, I perpetually cast them into the ocean of material existence, into various demoniac species of life. Down, down, down. जो द्वेषी प्रकार के लोग हैं, जो सारे लोगों में नरोत्तम हैं, उनको मैं सदैव भौतिक संसार के सबसे निचले भाग में धकेलता हूँ. Devotees are going up, demons are going down. Whoa! Friction! जो भक्त हैं वो ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, जो असुर हैं वो नीचे की दिशा में जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे से रगड़ रहे हैं. Friction causes fire. और उससे अग्नि उत्पन्न होती है. So what's the fire? तो वो अग्नि क्या है? It makes the Lord appear. Jwala Nishinga. Jwala Nishinga means that his mane is on fire. When there's friction between the divine and the demoniac, Nṛsiṁhadeva ki. तो उस अग्नि से ज्वाला नरसिंहा प्रकट होते हैं. नरसिंह भगवान की. Nṛsiṁha has many different names. Jwala means like fire. He appears like fire. नरसिंह भगवान के नाना प्रकार के नाम हैं. ज्वाला का अर्थ है अग्नि के समान. The acharyas explain that fire has two potencies. It destroys and it purifies. आचार्य हमें समझाते हैं कि अग्नि के दो कार्य हैं. एक तो वो विनाश करती है, साथ ही साथ शुद्ध करती है. Like a fire can destroy a hospital, but a fire can also purify medical instruments, like in the old days. जैसे कि एक अग्नि अस्पताल को जला सकती है और साथ ही साथ जो मेडिकल यंत्र है उसको शुद्ध भी कर सकती है. पुराने दिनों में ऐसे होता था. So when Jwala Nishinga appears to protect his devotees, he destroys Hiranyakashipu. He also purifies Hiranyakashipu. तो ज्वाला नरसिंह जब प्रकट होते हैं हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, तो हिरण्यकशिपु को शुद्ध भी कर देते हैं. No doubt Hiranyakashipu was destroyed. तो इसमें कोई संशय नहीं है कि जो हिरण्यकशिपु है वो उसका विनाश कर दिया था. Nṛsiṁhadeva, when he caught Hiranyakashipu, then he put him on his lap
and he tore out his heart and threw it to the other side of the assembly hall. That means you're dead. नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को पूर्ण रूप से दबोच लिया, अपनी जांघ पर रखा, उसका हृदय निकालकर उस कक्ष के दूसरे भाग में फेंक दिया. इसका मतलब उसकी मृत्यु हो गई. Just to make sure the asura was dead, he took his intestines and wrapped them around his neck. That pretty sure sign someone's dead. और ये सुनिश्चित करने के लिए, दिखाने के लिए कि इसका वध हो गया है, उसकी आंतड़ियां निकाली और अपने चारों ओर लपेट ली. But more important, by the touch of the Lord's nails, the transcendental nails of the Lord, Hiranyakashipu was purified. जब नरसिंह भगवान के दिव्य नक्ष का स्पर्श हिरण्यकशिपु से हुआ, तो वो शुद्ध भी हुआ. By touching the body of Hiranyakashipu, all his material desires were purified. और जब भगवान ने हिरण्यकशिपु के शरीर को छुआ, तो उसकी जितनी भौतिक इच्छाएं थी, वो शुद्ध हो गई. How do we know that Hiranyakashipu lost all material desires? हमें कैसे पता है कि हिरण्यकशिपु ने सारी भौतिक इच्छाएं खो दी थी? Because when Lord Nṛsiṁhadeva asked Prahlada Maharaja, he said, "Ask me for a benediction, Prahlad. You're my devotee. I can give you benediction. What do you want?" क्योंकि भगवान नरसिंह ने प्रहलाद महाराज को कहा कि मेरे से वर मांगो प्रहलाद, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ. So like a true Vaishnava, Prahlada Maharaj, he didn't take offense. He said, "Let my daddy be liberated. Come on, please. He's my dad. Give him moksha." तो एक सच्चे वैष्णव की तरह उन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया. उन्होंने कहा कि हे भगवान, मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए. So Lord Nṛsiṁhadeva replied, "He's already liberated by the touch of my nails. Not only him, but 10,000 generations before him and 10,000 generations into the future will all be liberated by my mercy." मेरे नाखून के स्पर्श से वो पहले ही उनका उद्धार हो गया है. तो उनका क्या, उससे पहले की 10,000 पीढ़ियां और उसके बाद की 10,000 पीढ़ियां, सबका उद्धार हो गया है. Bhagavan Nṛsiṁhadeva ki. So actually, the pastime is such that Hiranyakashipu, he ascended to Vaikuntha, to the planet of Nṛsiṁhadeva, and he serves there as a servant of Nṛsiṁhadeva. He got to keep his mustache, I read in Srimad Purana. तो लीला इस प्रकार से है कि जो हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंहदेव का लोक प्राप्त हुआ और वहाँ पे वो उनके सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं. और पुराणों में वर्णन आता है कि उसको अपनी मूंछें रखने की अनुमति दी थी भगवान ने. Sometimes in Western countries, when I'm preaching, people say, "What kind of God is this? He kills people. Jesus saves people. Your God kills people." जब मैं पाश्चात्य देशों में प्रचार करता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा कैसा भगवान है जो लोगों को मारता है? यीशु तो लोगों का उद्धार करते थे, उनको बचाते थे, और तुम्हारा लोग मारता है. But nothing God does is ordinary, it's extraordinary. भगवान जो भी करते हैं वो साधारण नहीं होता, वो असाधारण होता है. So by the touch of his nails, which it's described are an expansion of Sudarshan Chakra, the person who gets touched by the nails of the Lord, moksha, or even better, Putana, after Krishna killed her, she went to Golok and she became a nurse in the home of Nanda and Maharaj, Nanda Maharaj and Yashoda. I do not follow the Sudarshan part. Huh? Sudarshan. So when he touched him with the nails, he got liberation moksha, more so than even Putana. That's too complicated. When Krishna killed Putana, Putana gave her breast milk, Krishna sucked her breast milk down. She got more than moksha, liberation. She went to Goloka and became a nurse in the home of Nanda and Yashoda. जब भगवान ने पूतना का वध किया, तो जो पूतना को भगवान के मां का दर्जा प्राप्त हुआ उनके लोक में. So that the Lord saved Prahlada Maharaja is marvelous, but the fact that he liberated Hiranyakashipu is perhaps even more astounding. भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, परंतु साथ ही साथ उन्होंने हिरण्यकशिपु का जो उद्धार कर दिया, ये तो और भी असाधारण बात है. That's why on Lord Nṛsiṁhadeva's appearance day, many Nṛsiṁha bhaktas, they also celebrate it as the disappearance day of Hiranyakashipu. तो बहुत से भक्त जब भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य दिवस होता है,
तो उस दिन हिरण्यकशिपु का तिरुभाव दिवस के रूप में भी मनाते हैं. When I was a new devotee, I hadn't actually joined the temple yet, but I was visiting the temple. I was invited to the festival of Lord Nṛsiṁhadeva's appearance. तो जब मैं शुरुआत में जुड़ा था तब मैं भक्त नहीं बना था, बिल्कुल नया था, तो मेरे को आमंत्रित मिला मंदिर में आने के लिए. उस दिन नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस था. I wasn't exactly sure what it was because I was new. और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या है, क्योंकि बहुत नया था. And I remember very clearly when I came in the temple, wow, there's a big celebration. One devotee smiled. He said, yeah, this is the disappearance day of Hiranyakashipu. We're celebrating. Like, what? One devotee said, no, don't tell him he's a new bhakta. It's the appearance day of Nṛsiṁhadeva. And they had an argument. No, it isn't. It's the disappearance day of Hiranyakashipu. तो जब मैं मंदिर में आया तो बहुत महान उत्सव चल रहा था और एक भक्त ने मुझे बताया कि आज हम हिरण्यकशिपु का तिरुभाव दिवस मना रहे हैं. तो दूसरे भक्त ने कहा, अरे इनको मत बताओ, ये तो नए हैं, इनको बोलो नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है. It's also interesting to note that the Srimad Bhagavatam states that Prahlada Maharaja was also purified by the appearance of Lord Nṛsiṁhadeva. ये बहुत रुचिकर है. श्रीमद् भागवतम के अनुसार प्रहलाद महाराज भी भगवान की उपस्थिति से शुद्ध हो गए. Prahlada Maharaj was purified? प्रहलाद महाराज शुद्ध हो गए थे. It's very clear. 7th canto, 9th chapter, verse number 6 says, सप्तम स्कंद के जो 9वां अध्याय है उसके 6ठे श्लोक में वर्णन है. by the touch of Lord Nṛsiṁhadeva's hand on Prahlada Maharaja's head, Prahlad was completely freed of all material contamination and desires. नरसिंह भगवान का जो हाथ है जब प्रहलाद महाराज के उन्होंने सर पर रखा, उसके स्पर्श से प्रहलाद महाराज सारे भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए थे. As if he had been thoroughly cleansed. कि जैसे उन्होंने पूर्ण रूप से स्नान किया. Therefore he became at once transcendently situated, and all the symptoms of ecstasy became manifest in his body. इसलिए एक बार में वो दिव्य पद पर स्थित हो गए और भाव के सारे लक्षण उनके शरीर में प्रकट हुए. His heart filled with love and his eyes filled with tears. उनका हृदय प्रेम से आप्लावित हो गया और उनके जो नेत्र हैं वो उसमें अश्रुधार बहने लगे. And thus he was able to completely capture the lotus feet of the Lord within the core of his heart. और इसलिए वो भगवान के चरण कमल को पूर्ण रूप से उन्होंने कैप्चर कर लिया अपने हृदय के अंतःकरण में. Now wait a minute. Prahlad's a great devotee. We see him as a pure devotee. He's one of the 12 Mahajans, one of the authorities, ultimate authorities in the science of Krishna consciousness. एक मिनट, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त जो 12 धर्म के अधिकारी हैं उनमें से एक महाजन है वो. One might question, how can we say he has material desires? तो ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्रहलाद महाराज के पास भौतिक इच्छाएं थी? It's a big question. ये बहुत बड़ा प्रश्न है. But Srila Prabhupada answers the question in the purport. परंतु श्रीला प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं तात्पर्य में. Perfect questions, perfect answers. पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर. Listen to this. इसको सुनिए. Prabhupada writes, Prahlada Maharaj was born in a demoniac family, and as a result, demoniac blood virtually flowed throughout his body. श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज का जन्म एक आसुरिक परिवार में हुआ, जिसके फलस्वरूप जो आसुरिक रक्त था वो उनके शरीर में संचारित हो रहा था. Of course, again, he's Nitya Siddha, but this is the Leela, this is the pastime to show us the power of the Lord's mercy. निश्चित रूप से वो नित्य सिद्ध है, परंतु ये लीला हो रही है जिसमें एक शुद्ध भक्त की शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है. Another way to look at that is that the acharyas say that if there was any contamination in Prahlada Maharaj's heart, it was the sinful reactions of his followers that he accepted. और आचार्यगण बताते हैं कि अगर प्रहलाद महाराज के हृदय में कोई भी दूषीकरण था तो वो उन पापों का फल था. उन्होंने जिनको जो उनके फॉलोअर्स थे जिनको उन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था उनके पापों का फल था. Just so we understand, when the spiritual master falls sick,
generally we understand it's due to the sinful reactions that he's absorbed from his disciples. So he gets sick because he has to absorb the karma. जैसे कि हम समझते हैं जब आध्यात्मिक गुरु बीमार पड़ते हैं तो अपने शिष्यों के पापमय कार्य के फल के परिणाम स्वरूप वो बीमार पड़ते हैं. Just like Prabhupada, as he was departing this world on his deathbed, he noted that his illness was the result of accepting, he said, too many unqualified disciples. जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जब वो इस संसार से अप्रकट हो रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि जो उनकी बीमारी है बहुत सारे अयोग्य शिष्यों को स्वीकार करने के फलस्वरूप है. Therefore, Prabhupada said, after initiation, the disciples should be very careful not to commit sinful activities so as to burden the spiritual master. He said, please don't burden your old spiritual master. Act properly in Krishna consciousness. इसलिए श्रीला प्रभुपाद अक्सर इस बात पर बल दिया करते थे कि विशेष रूप से दीक्षा के बाद शिष्य को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना व्यवहार रखना चाहिए. और प्रभुपाद कहते थे एक बुरे व्यक्ति पर अपने पापों का बोझ मत डालो. So if there was any material contamination in the blood of Prahlada, it was because he was born in a family of demons. His body is made from the semen and the ovum of the mother and father, but more so because he's very kind. He accepted so many followers, and as a result, there was some contamination. तो जो हम बोलते हैं प्रहलाद महाराज के हृदय में जो दूषीकरण था क्योंकि उनका असुरिक परिवार में जन्म हुआ था, उनका जो शरीर है जो वीर्य बना था, असुरिक वीर्य से बना था, परंतु इसके साथ साथ जैसे लोगों को उन्होंने स्वीकार किया था उनके पापों के फलस्वरूप वो दूषीकरण बताया जाता है. Therefore, Jiva Goswami says in Tat Sandarbha that the Guru should only accept as many disciples as he can handle, that he can deal with their karma and deliver them. इसलिए श्रीला जीव गोस्वामी चंद्र में बताते हैं कि एक गुरु को उतने ही शिष्य स्वीकार करना चाहिए जितनों का कर्म के साथ वो डील कर सके और साथ ही साथ उनका उद्धार कर सके. I mean, we struggle with our own material desires. How can a spiritual master accept the karmic sinful reactions of 1,000 disciples? Like, hello, how does he do it? तो हम अपने भौतिक इच्छाओं के साथ संघर्ष करते हैं. तो कैसे संभव है कि जो एक आध्यात्मिक गुरु है ऐसे हजारों शिष्यों को स्वीकार करता है और उन सबके कर्मों के साथ डील करता है? कैसे संभव है ये? Because one of the qualifications of a bona fide spiritual master, he has full faith in the chanting of Krishna's holy names. And those holy names can destroy all sinful reactions in just one moment. जो प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु है उसका एक लक्षण ये है कि उसका पूर्ण श्रद्धा है भगवान के पवित्र नाम पे. भगवान का पवित्र नाम एक क्षण में सारे पापमय कर्मों का क्षय कर सकता है. How has His Holiness Jayapataka Maharaj accepted 60,000 disciples? Because he has full faith in the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. तो कैसे संभव है कि परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज उन्होंने 60,000 शिष्यों को स्वीकार किया है क्योंकि उनकी पूरी श्रद्धा है भगवान के पवित्र नाम में. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे राम. Fear personified is afraid of the holy names. जो भय का स्वरूपमान है वो भी भयभीत होता है हरि नाम से. Just like one time Prabhupada gave me a personal instruction. एक बार श्रीला प्रभुपाद ने मुझे व्यक्तिगत निर्देश दिया. He asked me to go to France and open a temple. उन्होंने मुझसे फ्रांस में जाके मंदिर खोलने के लिए कहा. Prabhupada, I don't speak French. प्रभुपाद मुझे फ्रेंच भाषा नहीं आती. I only know oui, no. No. So Prabhupada looked at me, he said, Indradyumna, you preach boldly and you have faith in the holy names. तो प्रभुपाद ने कहा तुम शक्तिशाली रूप से प्रचार करो और भगवान के पवित्र नाम में पूरी श्रद्धा रखो. So when the spiritual master gives an instruction to one disciple, it's actually meant for all his disciples. जो आध्यात्मिक गुरु एक शिष्य को जो निर्देश देते हैं तो सभी शिष्यों के लिए ही लागू है. Prabhupada himself, he said, I went to America with nothing, but my mission was successful for two reasons. I had faith in the words of my spiritual master, and I had faith in the chanting of Hare Krishna.
श्रीला प्रभुपाद ने खुद बताया कि पाश्चात्य देश जाके मैंने प्रचार शुरू किया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, परंतु फिर भी मेरा प्रचार सफल हुआ दो कारणों से। पहला, मुझे आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में पूरी श्रद्धा थी, और दूसरा, मुझे भगवान के पवित्र नाम में पूरी श्रद्धा थी। So any contamination that may have been there in Prahlad was because he was born in a demoniac family, and he had many followers whom he accepted their sinful reactions. तो कोई भी जो दूषीकरण प्रहलाद महाराज के जीवन में उपस्थित था, वो इसलिए था क्योंकि उनका आसुरी परिवार में जन्म हुआ, और जो उन्होंने शिष्यों को स्वीकार किया उनके पापमय कर्मों के कारण। Of course, Hiranyakashipu, he saw it differently. और निश्चित रूप से जो हिरण्यकशिपु है, उसने एक अलग दृष्टि से इसको देखा। He considered his son contaminated because he had become a devotee of Vishnu. तो उसने देखा कि उसका जो पुत्र है वो बहुत ही दूषित हो गया है। क्यों? क्योंकि वो विष्णु का भक्त बन गया है। One time he took Prahlad on his lap and he inquired, Prahlad, what is the best thing you've learned in school today? एक बार उन्होंने प्रहलाद महाराज को बहुत प्रेम से अपने गोद में बिठाया और पूछा, प्रहलाद, तुमने अपने विद्यालय में आज सबसे उत्तम चीज क्या सीखी? So Prahlad looked at his father, smiled. Pita, the best thing I learned in school is Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasam, Sakyam, Atmanivedanam. तो प्रहलाद महाराज ने पलटकर प्रेम पूर्वक पिता के मुख की ओर देखा और उन्होंने कहा, पिता, मैंने सबसे उत्तम चीज जो आज सीखी वो है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम. So apparently Hiranyakashipu, he wasn't paying close attention because he didn't hear the Vishnu Smaranam. So he said, yes, Prahlad, it's very nice, you're very eager to chant my glories. He didn't hear the Vishnu Smaranam. Shravanam, Kirtanam, Hiranyakashipu, Smaranam. He wasn't paying attention. तो जो हिरण्यकशिपु है वो ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसे लगा कि जो प्रहलाद है वो कह रहा है श्रवणम, कीर्तनम, हिरण्यकशिपु, स्मरणम, कि वो हिरण्यकशिपु के बारे में बात कर रहा है। So Prahlad said, Pita, no, I meant Vishnu, not you. तो प्रहलाद महाराज ने कहा, पिता, मैं विष्णु के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके बारे में नहीं। So Hiranyakashipu, he screamed at the teacher, Sandanamarka, where has he learned these things? Who's contaminating my son? The devotees of Vishnu? He had it all backwards. हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित होकर चीख कर बोला उनके शिक्षकों को, किसको ये चीजें कौन सिखा रहा है? क्या कोई विष्णु के भक्त आ गए हैं यहाँ पर? Just like sometimes in the West, when a young boy or a girl wants to become a Hare Krishna devotee, the parents consider it a great sin. जैसे पाश्चात्य देशों में अगर कोई युवक हरे कृष्णा भक्त बनना चाहता है, तो उसके जो माता पिता हैं उसे लगता है कि बहुत बड़ा पाप हो गया। One time I saw a cartoon in the newspaper in 1970s. 1970 के दशक में मैंने अखबार में एक कार्टून पढ़ा। A young teenage girl, she's coming home and her parents are watching television. कि एक युवती जो टीनेजर थी घर पे आती है और देखती है उसके माता पिता टीवी देख रहे हैं। You know, totally absorbed in the television program. और पूर्ण रूप से निमग्न है उस And the girl comes in the door and the mother says, "Oh, welcome back from school. What did you learn today, honey?" तो जो उसकी माँ होती है वो देखती है, अरे अपनी बेटी को तुम आ गए, स्वागत है, तुमने आज प्रिय क्या सीखा अपने स्कूल में? So a young teenage girl said, "Mommy, I learned how to smoke cigarettes today." तो युवती थी, उसने कहा, मम्मी, मैंने आज सिगरेट पीना सीखा स्कूल में। The mommy's watching the TV. She said, "Oh, that's okay. That's good, honey." और जो उसकी माँ है वो टीवी में निमग्न थी, तो उसने कहा, ठीक है प्रिय। And the next day she comes home. तो अगले दिन वो वापस घर आती है। The parents are still watching television. तो उसके माता पिता फिर भी टीवी देख रहे हैं। And she comes in, the mother says, "Honey, how was school today?" तो उनसे वही प्रश्न पूछती हैं, तुम्हारा स्कूल कैसा था आज? "Mommy, I learned how to take drugs, heroin." कि मम्मी आज मैंने ड्रग्स लेना सीखा, हेरोइन। "Oh, that's okay, honey. Just go to your room. I'm watching TV." तो वो क्योंकि टीवी देखने निमग्न थे, ठीक है। Next day she comes home. अगले दिन दोबारा घर आते हैं। We could go on and on. Mother says, "What did you learn in school?" "Mommy, I learned illicit sex." तो हम ऐसे जितना भी चला सकते हैं कि उसने पूछा,
माँ ने पूछा आज तुमने क्या सीखा? It's okay, honey. Don't disturb me. I'm watching TV. तो कहा ठीक है और डिस्टर्ब मत करो, हम टीवी देख रहे हैं. So the last part of the cartoon is she comes in home and she's dressed in a sari, her hair's tied back, she has tilak, kuntimala, bead bag, she's chanting Hare Krishna, Hare Krishna. तो जो कार्टून का आखिरी हिस्सा था उसमें वो आती है साड़ी पहनी हुई है, तिलक लगाया हुआ है, माला लटकाई हुई है और जप कर रही है. So the mother says, "Welcome back again, honey, from school. What did you learn today?" उसकी माँ कहती है तुम्हारा पूरा स्वागत है, आज तुमने क्या सीखा? "Mommy, I became a Hare Krishna." मामी मैं हरे कृष्णा बन गई. The mother goes, "Oh no, how horrible! My poor daughter, what happened to you? You were polluted at school. Hare Krishna, oh!" She throws a shoe and breaks the television. तो उसकी माँ बहुत चीखने चिल्लाने लग गई, कितना भयावह हो गया, दुर्भाग्य की बात है, कितना क्रोधित होकर उसने अपना जूता लिया और टीवी फोड़ दिया. Sometimes the parents think, "Oh, the poor girl's been polluted. She became a Hare Krishna." बहुत बार अक्सर माता पिता सोचते हैं कि मेरा संतान हरे कृष्णा बन गया, इसका तो दूषीकरण हो गया पूर्ण. You know, my godbrother Giriraj Swami, when he joined the movement, his father was very upset. मेरे जो गुरु भाई हैं श्री गिरिराज स्वामी, जब उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ज्वाइन किया तो उनके जो पिता थे बहुत नाराज हो गए. His father was a judge, उनके जो पिता हैं वो जज, high prestigious position, and he came from a very wealthy family. तो बहुत ही घानेटे परिवार से थे और बहुत ही प्रेस्टिजियस पद पर थे. And Giriraj Maharaj, at that time, he was going to law school. और उस समय गिरिराज महाराज एक लॉ स्कूल में जाते थे. Maharaj is very intelligent. He's got a good memory, you know. तो महाराज बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत अच्छी उनकी स्मरण शक्ति. So one day he came home from, there was, a vacation in school. He came home, instead of in a nice suit with the hair combed back, he came in saffron dhoti, shaved head with tilak. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. His father, "What happened to you?" तो अक्सर वो अपने छुट्टियों से आते थे बिल्कुल सूट में, बिल्कुल बांध करके, और इस बार जो छुट्टियों में जब वो आए सैफरन कपड़े में, माला लटकाई हुई, उनका हेड शेव हो गया, क्योंकि पिता बिल्कुल डर गए, क्या हो गया तुम्हें? So Giriraj Maharaj said, "I met my spiritual master, Srila Prabhupada. He's teaching me to love Radha and Krishna." गिरिराज महाराज ने कहा कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से मिला हूँ, श्रीला प्रभुपाद से, और वो मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे भगवान से प्रेम करना है, कृष्ण से. He was in bare feet, like just his bead bag, no money, nothing, just brahmachari. I met my guru, Srila Prabhupada. और कुछ भी नहीं था, सिर्फ जप माला थी, और बहुत सरलता से कहते हैं मैं अपने गुरु से मिला, श्रीला प्रभुपाद से. So his father took out a checkbook, write a check, and he wrote a check for $1 million. That nowadays that's like $10 million. He wrote a check for $1 million. तो उनके पिता ने चेकबुक निकाली और $1 मिलियन का चेक लिखा, जो आज की तारीख में वो $10 मिलियन के बराबर होगा. And then he wrote the date down. उन्होंने उस दिन की तारीख लिखी. And he pushed the check over the table to Giriraj Maharaj. He said, "If you can leave this Hare Krishna movement, you're contaminated now, you're brainwashed. If you can leave this movement, I'll sign this check and you can have $1 million today. Leave your guru for $1 million." तो उन्होंने उस चेक को मेज पर रखा और गिरिराज महाराज की तरफ सरकाया और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा माइंड वॉश कर दिया गया है, अगर तुम अभी इस आध्यात्मिक संस्था को छोड़ दो, अपने गुरु को छोड़ दो, मैं इस पे अभी साइन कर दूंगा और ये $1 मिलियन तुम्हारा. Maharaj just pushed the check back. He said, "I'll stay with my spiritual master forever." तो महाराज ने जो चेक है वापस सरकाया अपने पिता की ओर और कहा कि मैं सदैव अपने आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में उनके साथ रहूंगा. So whatever, according to the pastime, whatever contamination was there in Prahlada Maharaj's heart, by the touch of the Lord's hand, Abhay Mudra, touch of the Lord, it all went away and Prahlada experienced ecstasy. तो जो भी दूषीकरण प्रहलाद महाराज के हृदय में था, भगवान के स्पर्श से जो अभय मुद्रा है, वो तुरंत खत्म हो गई.
We're not pure devotees yet. I mean, maybe some of you are. I'm not. There's still some residue of material life there. So this just gives us faith that if the Lord shows His hand, if He gives us abhayamudita, fearless, be fearless, keep chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. One day all the contamination in your heart will go away. That's one of the lessons from this pastime. तो हम अभी शुद्ध भक्त नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, हो सकता है यहाँ पे कई शुद्ध भक्त उपस्थित हो, हमारा भी कुछ भौतिक जीवन बाकी है। तो ये जो लीला में बहुत श्रद्धा देता है कि किस प्रकार से भगवान ने अपना जो हस्त है, अगर उससे जो स्पर्श करेंगे तो हमारा सारा दूषीकरण खत्म हो सकता है। तो ये एक शिक्षा है इस लीला से। So there's many lessons to be learned from the 7th canto. Actually, if you look at the number of lectures Prabhupada gave, most lectures came from 7th canto. तो इस सप्तम स्कंद से बहुत सारी शिक्षाएं हैं सीखने के लिए। अगर आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद के क्लासेस, तो सबसे ज्यादा जो कक्षाएं उन्होंने दी वो सप्तम स्कंद से है भागवतम के। And we have to choose, do we want to follow in the footsteps of Prahlada Maharaja, or do we want to follow in the footsteps of Hiranyakashipu? तो हमें ये चुनाव करना होगा कि हम प्रहलाद महाराज के पदचिन्हों का अनुसरण करें या हिरण्यकशिपु के पदचिन्हों का अनुसरण करें। Hiranyakashipu had everything one could desire materially. He conquered the 14 worlds. हिरण्यकशिपु के पास सारी वो चीजें उपलब्ध थी जिसकी कोई कामना कर सकता है इस भौतिक संसार में। 14 लोगों पर वो विजयी था। He was missing the most important thing. परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके पास नहीं थी। He didn't have Krishna consciousness. उसके पास कृष्ण भावनामृत नहीं। And we can see, although he had everything, he wasn't satisfied. Prahlada Maharaj was a 5-year-old boy. He had nothing, but he was completely satisfied because he was Vishnu Bhakta. He was Krishna conscious. Krishna, by definition, is a reservoir of all pleasure. So if you have Krishna, you have everything you want. तो अगर हम देखें कि हिरण्यकशिपु के पास सारी चीजें उपस्थित थी, फिर भी क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं थी, वो हमेशा असंतुष्ट रहता था। और दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज 5 वर्षीय बालक, इसके पास कुछ नहीं है, परंतु क्योंकि वो विष्णु भक्त था, इसलिए सदैव संतुष्ट रहता था। Good translator. Why is Hiranyakashipu in the Bhagavatam? Bhagavatam, Amala Purana, the spotless Purana, dealing only with pure devotional service to Krishna. What's this big demon, a big part of the 7th canto, doing there? Like, get out of there, Hiranyakashipu. This is the Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम में इस असुर के बारे में कथा क्यों है? हिरण्यकशिपु के बारे में तो भागवतम है, अमल पुराण है, तो इसमें असुर की कथा क्यों है? हिरण्यकशिपु तो यहाँ से जाओ। Just for the comparison. सिर्फ तुलना के लिए। Like when the lady goes to the market to buy mangoes. जैसे अगर एक महिला मार्केट जाती है आम खरीदने के लिए। There's some mangoes there. There's a yellow mango with some black spots. There's a green mango. It's not ripe yet. तो वहाँ पे एक पीला आम है जिसमें कुछ काले धब्बे हैं और दूसरी तरफ एक बिल्कुल हरा आम है जो थोड़ा कच्चा है। So she picks the 2 mangoes up and she compares them. Yes, it's breakfast for the children. Aha, yellow mango. Green mango she puts down. By comparing the 2, she can see the superiority of one over the other. तो वो दोनों आमों को उठाती है और तुलना करती है कि कौन सा इसके बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा है। तो वो हरा आम नीचे रख देती है और पीला आम ले लेती है। तो ये तुलना के लिए है कि कौन सा श्रेष्ठ है और किसको स्वीकार करना चाहिए। So Pravritti Marg and Nivritti Marg. There's the path of sense gratification and there's the path of renunciation, culminating in devotional service to Radhe Shyam. तो प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग है जो आगे मिलते हैं भगवान की भक्ति में। We're following in the path of Prahlada Maharaja. और हम प्रहलाद महाराज के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। And that's the recommendation of Sri Narad Muni. और यही सुझाव सलाह है श्री नारद मुनि की। He concludes 7th canto, 10th chapter, verse 47. His conclusion is very instructive and the best way to end the class this evening. तो 7वें स्कंद के जो 10वें अध्याय है, तो वहाँ पर वो इसका सार देते हैं और ये सबसे उत्तम चीज है जिससे हम आज की कक्षा को समाप्त कर सकते हैं। Listen to this if you follow Prahlada Maharaj.
इसको सुनिए अगर आप प्रहलाद महाराज का अनुसरण करना चाहते हैं। Prahlada Maharaja was the best amongst exalted devotees. Anyone who with great attention hears this narration concerning the activities of Prahlada Maharaj, the killing of Hiranyakashipu, and the activities of the Supreme Personality of Godhead, Nṛsiṁhadeva, surely reaches the spiritual world where there's no anxiety. Haribo! सभी उत्तम कोटि के भक्तों की श्रेणी में प्रहलाद महाराज सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई भी जो ध्यान पूर्वक इस लीला का श्रवण करता है, प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों से संबंधित या हिरण्यकशिपु के वध से संबंधित और साथ ही साथ परम पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों से संबंधित, नृसिंहदेव के से संबंधित, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। जहाँ वैकुंठ है, वहाँ किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। It's said in music you always want to end the concert on a high note. Da 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 da. Perfect high note. Narada Muni's glorification of Prahlada Maharaj, whom we're all following because he's one of our Mahajans. तो विद्यालय में जो संगीत विद्यालय है, वहाँ शिक्षा दी जाती है कि जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है उसको आप हमेशा बिल्कुल हाई नोट पर इसका समापन करना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि स्वयं प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं श्लोक में, बहुत ही हाई नोट पर हम क्लास। I thank all of you for being present this evening and listening to my very humble discourse. मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि शाम आप यहाँ पर उपस्थित हैं और इतना मेरा जो विनम्र प्रवचन है उसको आप सुन रहे हैं। It's not my first time in this temple or not my first time in Punjabi Bhag. तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार यहाँ पंजाबी बाग में आया हूँ। I remember Surabi Maharaj. He's the person who started the first preaching center here in the 1970s or 1980s. 80s. तो सुरभि स्वामी महाराज जिन्होंने इस केंद्र की शुरुआत की थी, यहाँ प्रचार शुरुआत किया था 1980 के दशक में। It was a little house. We come on the way to Vrindavan. We stop at his little house where he had a preaching center. और वृंदावन जाते हुए हम इस छोटे से घर में रुका करते थे। So he said one day, I want to increase the preaching here in Punjabi Bhag. I'm going to go to Jaipur and get some Radha Krishna deities. तो एक बार उन्होंने कहा कि मैं इस पंजाबी बाग क्षेत्र में प्रचार बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं जयपुर जाऊँगा और वहाँ से राधा कृष्ण के विग्रह लाऊँगा। Now, in those days, the carvers were pretty good, but they weren't so good in carving the deities. They were okay, but not so good. और उस समय जो शिल्पकार थे तो बहुत अच्छे थे, पर तो उतने अच्छे नहीं थे। तो जो विग्रह बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, तो कई बार अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी। So one day, Swami Maharaj, he went to Jaipur, he ordered some Radha Krishna deities, and then a few weeks later he came back with, Krishna in one hand and Radha. They're pretty big, heavy, but he was a strong man. He brought them all wrapped and put them on the table. Said, "You want to see the deities I got in Jaipur?" I said, "Yeah, okay." I remember how the carvings were. I said, "Yeah, okay." तो एक दिन वो जयपुर से कृष्ण और राधा रानी की जो मूर्तियाँ हैं उसको लाए। वो बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, दोनों मूर्तियों को पकड़ के लाए और उन्होंने मेज पर रखा और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं जयपुर से विग्रह लाया हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो उस समय मैंने कहा ठीक है दिखाओ, क्योंकि मेरा ऐसा impression था जयपुर के लोग पे। Your deities, your smaller Radha Krishna, he put them on the table. He took off the cloth. Literally, I fainted seeing how gorgeous was Krishna, how gorgeous was Shama Sundar, all the brahmacharis. Whoa! They're the most beautiful deities in ISKCON. और उन्होंने जैसे ही कपड़ा हटाया तो मैं लगभग बेहोश होने वाला था उनके सौंदर्यता को देखकर। इतने सुंदर विग्रह, इतने सुंदर श्याम सुंदर, इतने सुंदर राधा रानी, और जो सारे ब्रह्मचारी एक साथ बोले कि पूरे ISKCON में सबसे सुंदर विग्रह ये हैं। You see how Krishna, how his head's turned like this, and Radharani
perfectly carved Radha and Krishna. Now they've expanded as bigger deities as well, but I'm traveling the world, I'm always thinking, I have to go back to Punjabi Bhag and see Radha Shyam. तो आप देखेंगे कैसे इतने सुंदर रूप से कृष्ण का जो सिर है हल्का सा ऐसे झुका हुआ है और बिल्कुल इतनी परफेक्ट कार्विंग जो श्रीमती राधा रानी की है और अभी और भी विग्रह आ गए हैं और उस समय मैं पूरे विश्व में कहीं भी भ्रमण कर रहा होता था मेरे हृदय के अंदर एक ये इच्छा सदैव रहती थी मेरे को वापस पंजाबी बाग जाकर उनके दर्शन करने हैं. So when sannyasis travel, because they're renunciates, they don't have any possessions, they sometimes beg from the householders. तो सन्यासी जब यात्रा करते हैं बताते हैं उनके पास कोई अच्छी सामान वस्तु नहीं होता तो इसलिए गृहस्थों के पास जाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं. So I'm begging for all of you good householders, I'm begging you, please invite me back again so I can have darshan of your Radha Krishna deities. तो यहाँ पर जितने भी भक्त हैं जितने भी भक्त उपस्थित हैं उनसे मैं भिक्षा मांग रहा हूँ कृपया मेरे को यहाँ पर पुनः दोबारा निमंत्रित कीजिएगा जिससे मैं आकर यहाँ राधा राधिका रमन के दर्शन प्राप्त कर सकूँ.